नमामिता श्रीविशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु पते राधे गोविंद श्री हरे कृष्ण। कृष्णपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, शिल महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. In today's session, which is on Nectar of Instruction, we've been doing Nectar of Instruction for a while now. So, हमारे हिंदी भाषी भक्तों का भी स्वागत है। हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेशामृत ग्रंथ की डिस्कशन कर रहे हैं। हमें उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन आई है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो 6 गुण फर्स्ट वर्स के अंदर बताए हैं, हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। सर, पहला मंत्र वर्स नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट 1। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीव वेग उदरुपस्थित वेगम एतान वेगान योविष्यते धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्य। A sober person who can tolerate the urge to speak, mind's demands, the action of anger, and the urges of tongues, belly, and genitals is required to make the disciples all over the world. So we discuss how this verse is giving the definition of a guru. And Srila Prabhupada ji said each one of us should become a guru. So प्रभुपाद जी ने कहा कि हम सभी को गुरु बनना चाहिए और हम सभी एक दूसरे के शिक्षा गुरु होने चाहिए। हम सभी के अंदर ये गुरु की जो क्वालिटीज हैं ये आनी चाहिए। हमने बात करी वाचो वेगम की। Interesting enough, last week when we discussed that even if we will pick one quality out of them, then I said, okay, let's work on the very first one, Vacho Begum in our family. And my daughter, who's 13 years old, Shivani, she loved picking everyone, especially me. Anytime if I'm saying or anyone else is saying any unnecessary thing, she will say, Vacho Begum, Vacho Begum, Vacho Begum. She will just keep reminding all of us that if it's unnecessary, we don't really need to speak. There is no need for unnecessary talk. And in Grantha, we have Prajalpa, what we usually say gossiping. So Prajalpa is against the religion. Keto Dharma, Projita, it's one of the verses in Bhagavatam. So we should not do Prajalpa. Prajalpa नहीं करना चाहिए। वाचो वेगम सबसे पहली क्वालिटी। कैसे पता लगता है कि जो भक्त है वो धीर है? क्योंकि भक्त पेशेंट होता है। बहुत जल्दी ब्लाबर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, वी डोंट नीड टू से, वी डोंट नीड टू स्पीक। So we have been going through these slides. So very quickly, very briefly, we will go through all of them, and we can go past. Right, that's where we discussed, or we were discussing, that again it says the application. And that's the beauty. In the Grantha, Dharma is there. Srila Prabhupada ji said Dharma is not religion, it's a religion's activities, devotional services. So physically what we need to do. So Vacho Vegam is not just when we speak to each other, but when we are interacting with each other, how this will come in. And we've seen this example of snake and Todd. A Todd is tortoise.
When a frog does tur, snake will find the frog and will eat. Similarly, when we, a devotee, so शिला प्रभुपाद जी ने अपने एक प्रचार में, डिस्कोर्स में बताया एक लेक्चर के अंदर कि अगर भक्त अननेसेसरी के प्रजल्पा में समय व्यतीत करता है, तो जिस तरीके से स्नेक उस फ्रॉक को ढूंढ लेता है, ऐसे ही माया और मायावादी लोग उस भक्त को ढूंढ लेंगे अगर वो प्रजल्पा करता है। अगर हम अननेसेसरी टॉक करते हैं, तो जो अननेसेसरी टॉक को पसंद करते हैं वो लोग हमको ढूंढ लेंगे, और उसके बाद वो हमको फ्रॉक की तरह निगल जाएंगे। हमारा सारा समय बर्बाद हो जाएगा, हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा, अगर हम फ्रॉक की तरह टर टर करेंगे। And it's quite evident. We might have seen in our life, when we get spiritual, our activities become spiritual. And one of the yardstick, the way we find out is our material desires will go down and our spiritual desires will go up. And one of the example is that we might, if you used to like watching cricket or watching football, then now we are going to watch less because we are spending the time. It's not that consciously we are forcing ourselves not to watch cricket or football or Bollywood or Hollywood, but now because the time we have, we are consciously spending, maybe reading Bhagavatam, Bhagavad Gita, spending time with Guru Sadhu Sangha, attending temples, and then we will have less time, less energy, less taste for the material activities. But if we will spend time in material activities, then those friends will come back and then they will invite us. And this is what's been referred as that the snake is going to take away the dot, the frog. What is the solution? Krishna Katha is the solution, not silence. Again, प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा कि जिस तरीके से बुद्धिज्म कहता है कि हमको अपने सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए, हमें देखना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, हमें सुनना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वो मुश्किल है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वो अष्टांग योगी कलयुग के अंदर नहीं बन सकते। हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए इजी है कि हम अपनी इंद्रियों को भौतिक से निकाल के अध्यात्म में लगाएं। फ्रॉम मटीरियल वी engage, we divert our senses to the spiritual side of it, and that's what we are looking for. The whole idea is that. Now, in that, Vachovegam is one thing we discussed. Now, the Mansa is the mind control, because mind is the main culprit if we think about it. Because why the senses are going to engage in material or desires? Because of the mind. Mind is always associated with the intelligence, but mind is also associated with false ego. Remember, we have the gross body and we have the subtle body. The gross body is made up of this physical body parts, but the subtle is buddhi, man, ahankar. Intelligence is buddhi, man is mind, and then ahankar is the self-ego. So these three things, man, buddhi, ahankar. And in some places we also say chit, which is the consciousness, right? But we focus on these man, buddhi, ahankar. Man, the mind is in the middle. मन जो है वो बुद्धि की भी सुनता है और अपने अहंकार की भी सुनता है। हम बुद्धि को अगर सिर्फ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगाते हैं, हमारा अहंकार धीरे 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 कम हो जाता है। क्योंकि अहंकार क्या है? अहंकार हमारी फॉल्स आइडेंटिटी को ट्रू आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फॉल्स आइडेंटिटी, ये सब मेरा है, ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए है। ट्रू आइडेंटिटी, ये भगवान का है। जैसे भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि जो भी यज्ञ करते हो वो मेरे ही लिए करते हो। अगर देवी देवताओं का भी पूजा करते हो तो त्रुटि रूप से मेरा ही करते हो। इवन इफ यू pray to any demigods for anything, I'm the one who provides it. This is what Krishna says in Bhagavad Gita. So this is the true identity. If you understand that, then the mind is much easier to get towards intelligence. So that's the reason we need to work on our intelligence. So the mind will be
focus more towards the intelligence rather than the false identity. And slowly, gradually, we will see false identity will dissolve and the true identity will reveal itself. It's already there. The identity is there. Remember, it's the whole idea is that we don't need to acquire anything. It's not that we need to go out and get something new. People say, get the new skill. If I can't play piano, I can learn piano. I didn't have the piano skills, but now I have the piano skills. But here in spirituality, there's nothing new we need to acquire. What we have in the dormant form, it needs to be revealed. जो भगवान हमारे चित्त में हैं, एक चैत्य गुरु की तरह हमें चैत्य गुरु को सुनना है। वो जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको हमको और धीरे 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 डेवलप करना है। मनहा मनसहा वैक्यूम अट्रैक्ट अनर्थास। तो जहां पे बोला कि कृष्ण कथा सुननी है, साइलेंस नहीं रखना है, वाचो वेगम। मनसहा, अगर हमको माइंड कंट्रोल करना है तो माइंड कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन में आने वाले विचारों को खत्म कर दें। ऐसा नहीं करना। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ग्रंथों में भी है और बहुत अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी है। इमेजिन वी आर सिटिंग ऑन, वी आर वेटिंग फॉर अ ट्रेन, वी आर ऑन द platform, train platform. The train is coming, we are watching, and the train will go, and we are watching. We are not getting into the train. The train is the representation of the mind vibrations, thoughts we get in the minds. Every thought is like a vibration. Anytime the train comes in, we try to get in the train. We associate ourselves to the thoughts, and that's the reason the trouble happens, because we will never able to do that. And even if we will able to do that, we are in one train, but then the next train comes. Imagine if we are going in one train and we are watching the other train coming, and we would like to get associated with that train now. We will never able to do that. अध्यात्म में मनसहा, माइंड की वृत्ति को इस प्रकार समझाया गया है कि अगर हम एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर हैं और ट्रेन आ रही है, ट्रेन है जो विचार है हमारे। जब हम इंतजार कर रहे हैं ट्रेन स्टेशन के ऊपर, ट्रेन आई, वो ट्रेन एक विचार की तरह है, वो आएगी क्योंकि हम भौतिक संसार में हैं। लेकिन हमें उस के साथ में अटैच नहीं होना, हमें उस ट्रेन में चढ़ना नहीं है। बस देखना है वो विचार आया और वो विचार चला गया। इसको अगर हम पाली लैंग्वेज में कहें, जो बुद्धिज्म में यूज होती है, जो बर्मा में था, वर्ड है विपश्यना। विपासना, विपासना बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है। और इस प्रैक्टिस में विपासना का मतलब ही सिर्फ देखना है, नथिंग एल्स, सिर्फ देखना। और एक एग्जाम्पल आता है कि क्या हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है? नो, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। व्हाई? एग्जाम्पल आता है, अगर हम एक घर के अंदर, हम मकान मालिक हैं और एक चोर आ गया, हमें सिर्फ जग कर चोर को देखने की जरूरत है। चोर अपने आप, जब चोर को ये पता लग जाएगा हम जाग गए हैं, चोर चला जाएगा, भाग जाएगा। बुद्धिज्म के अंदर गौतम बुद्धा ने कहा, आई एम अवेक, अब मैं जाग चुका हूं। उन्होंने नहीं कहा कि मैं कुछ अब कंट्रोल करूंगा, अब मैं जाग चुका हूं, अब मैं देख सकता हूं, और जब मैं देखूंगा तो वो विचार आएंगे और चले जाएंगे। मैं उन विचारों से अटैच नहीं। Right. महाभारत के अंदर एग्जाम्पल आता है, महाभारत का युद्ध होने वाला है, लाखों करोड़ों लोग मरने वाले हैं। और जब वेद व्यास जी अपनी मदर से मिलने आते हैं, सत्यवती, तो उनकी मदर उनसे पूछती हैं कि इस युद्ध में क्या होगा। और वो बहुत प्यार से उनको बताते हैं कि सभी मारा जाएगा, पूरा ये युग का अंत आने वाला है, और कुरु में सब समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ एक राजा बचेगा जो कि परीक्षित थे। तो उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम इतने कठोर दिल के कैसे हो सकते हो?
how you could be like a stone-hearted, the way you have narrated this to me. How? And then he said, Ved Vyasji, that this is what Srila Prabhupada ji said it as well, that I'm just a messenger. I am a sannyasi. I don't attach to good or bad. This is going to happen. I'm not differentiating if it's good or it's bad. You asked me what's going to happen, I told you what's going to happen. There's no emotions in it. However, that doesn't mean that the devotee will become emotionless. Because remember, this is what we are doing on a first person. What will happen to me? Then no emotions when it's happening to me. But when it's happening to someone else, devotees, only one trouble devotees have, par dukha dukhi. Devotee gets agitated when the other devotee gets agitated. But when something happens in devotee's life, there's no trouble at all. Because everything comes as a train and everything goes as a train. We don't need to attach to that train. We don't need to board that train. That's as simple as it is. Of course, not so simple, not so simple to follow, to implement in our life, but this is as simple to understand. This is what we need to do. So that's where the mansa, the mind comes in. So we don't need to have a vacuum, no thoughts. We will never ever, or based on the scriptures, in Kali Yuga, human mind will never able to go vacuum. Never. But what we can do is, because if we are vacuum, it says anartha will come. And Saurabha Muni's example is there. Muni ने हजारों साल पानी में जाके तपस्या करी, भागवतम के अंदर एग्जाम्पल है। लेकिन वहां पे उन्होंने दो मछलियों को देखा कि वो आपस में प्रेम पूर्वक समय व्यतीत कर रहे हैं, और सालों की तपस्या वो एक क्षण में भंग हो गई, क्योंकि उनकी जो तपस्या थी वो डिवोशनल सर्विस नहीं थी। वो माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे सालों से, पर वो एक क्षण के अंदर उनका मन व्याकुल हो गया। बाहर आए, उस टाइम पे जो राजा थे उनके पास गए और कहते मेरे को आपकी पुत्री से विवाह कर। Years of meditation fell down in one moment. And there are many examples like that. Many examples. Mind. Mind. So we don't need to control the mind, we need to engage the mind. Right? And then what is the solution? Meditate on the lotus feet of Krishna. Right? Meditate on the lotus feet of Krishna. How we do it? By devotional service, bhakti, and Shravanam, Kirtanam, the 9 forms of bhakti given by, we very first thing, very easy thing, what we are doing now is just listening. But keep listening, keep listening. This is the engagement. Listening is probably one of the simplest way of devotional service, right? And once we have vacho vegam, once you have mind control, krodha, it's easier to understand, and that's why you see all these three are very together. If you Why people get angry? Probably these two things. Because somebody says something to us, our mind gets agitated. Oh, that person said that to me. Or we say something to someone and the other person gets agitated. Right? If we have mind and the speech, well, if you have the mind, then of course, highly likely the Vachuvegam will be controlled, because it's one of the senses and the mind control the senses. And remember the analogy from Bhagavad Gita, where the chariot is there, the Krishna is there, the Arjun is there, soul and super soul. And then at the hand of chariot, the reins are there to control the horses. Horses are the senses, and the reins which controlling the horses, they are those reins are mind. So mind is controlling, and the the charioteer is the buddhi is controlling. Hare Krishna. Yes, please, Mataji.
Hare Krishna Prabhuji, in the Bhagavad Gita, Krishna says that I am the mind. Now, after all the different describing various opulences, he said, I am the mind. Now, mind is the, after all this, I think mind is the worst enemy, I mean, in material world. And it's Yes, so, yes, so difficult to control, especially when you go into the material world. Everybody's reacting as per what their mind tells them. Relatives get spoiled, yes, relations get spoiled, wars start. All, I think mind is the main culprit, which is the cause of the huge problems here in this material world. But still, Krishna says, I'm the mind. yes, yes, Mataji, you're right. And the mind is probably the worst enemy. Hence, it says that, of course, in chapter 10, verse 22, Krishna says, among all the senses, I am the mind. Because in chapter 2, he goes like among all the rivers, among all the Mm, mountains, among all the snakes. That so there he's saying among all the categories, in each category, I am the best. That's the concept in chapter 10, what Krishna is trying to say. Indriyani manas chasmi. So the idea there in chapter 10 in Gita is that Krishna is saying that the I am the best, like I'm the leader in all the different categories you can think of, Arjun. I am the best. You're right. So because our mind is also considered as one of the senses, we could say sixth sense sometimes, right? mm, And so my mind is on top of all the senses. If mind is control, rest of the senses will follow. And the other analogy, that all the senses are controlled in terms of reins by mind, what we were discussing. Another thing, mind is terrible master and great servant. So mind is, if you think about it, mind is not the enemy, but uncontrolled mind uncontrolled. behaves as enemy. Right? So mind is not the enemy, but uncontrolled, unengaged mind behaves like enemy. Right? It's like our children. Mm, They are not our enemies. And if I talk on behalf of children, parents, we are not children enemy. But most of the time, the children they fight and they consider their parents as their enemies. Right? Because parents are the ones, so the children are happy to go and have any kind of talks with their friends, right? Because the friends, they will not correct the children, their own friends, right? You will say anything, oh, I did this, I played so much, and the other child will say, wow, you played so much video game, and that's it. But if a child will say same thing to the parent, the very first thing parent will say, that's wrong, don't do that. And then the parents will be considered as the enemy by the children. Right. It's I was listening one of the example. It's a old story, but a real one, unfortunately. In America, I guess, was it 11 years old child who who killed his I think 2.5 years sister because he was angry with the parents that since that he was the oldest one and he was the only child and he used to get all the attention, but since the sister came along the parents started spending more time with the sister, and then the elder one got jealous and he poisoned the sister, and the daughter died. And when they asked why, he said, so this is what jealous and enviness is. He said, the 11-year-old, that I wanted to give pain to my parents because my parents were troubling me. And they said, well, so the judge said that, why did you hurt the daughter? And then he said,
Because my parents love my daughter my sister the most. So that's why I wanted to give pain to my parents, and I knew that if I will hurt her, they will be most painful. So what happened there? This is like if their parents were not enemies, but that's how the mind made it feel like that, right? And this is where we can think mind is the best. Hence, Krishna said, among all the senses, I'm the mind. But if it's uncontrolled mind, untrained mind is like elephant. The another example which comes in Bhagavatam is that untrained mind is like a mad elephant. Right? So mind is not bad, but sorry if you're hearing the background noise, it's going down. My daughter is having her class downstairs, and we all are away from the home. So it's very important. Thank you so much for that question, Mataji. But yes, it's uncontrolled, untrained mind, which is like a mad elephant. And if mad elephant is the worst thing, uh, worse than anything else, it says in Bhagavatam that if a mad elephant is there, then you can't control it. However, if from the young age we start controlling the baby elephant, then even a small human sitting on the top of elephant can control elephant and can say, okay, you go left, you go right. Why? It's the same elephant. But that elephant now is a trained elephant. So the only thing we need to do with our mind is that we need to train the mind. We need to control the mind. We need to engage the mind. And that's the whole idea. That Mm. so we are not differentiating that is it good or is it bad? But yes, is it trained or is it untrained? It's like a knife. If you say mind is like a knife, is knife good or bad? Well, if a doctor will use for the surgery, it's amazing. It's a great tool. But if a murderer, somebody who would like to murder someone and use it, then so it's not the knife, but the intention and the skill we have to use it. So we need to definitely engage our mind and slowly, gradually, if we engage ourselves in devotional service, then yes, we can. We can. But thank you so much Mm. for that, Mataji. Yeah, Hare correct. Krishna. So, yes, the whole idea is to engage our mind and mansaha. If we have the full control over the mind, and even we don't really need full control, I think the people around us they start appreciating us. It's like somebody got maybe 100 kgs weight, and that person reduced the weight to 80 kgs, right? And the people will say, wow, you have done amazing. Now, when you go to the doctor, doctor will say, you're still obese because your weight was supposed to be, or weight is supposed to be 60, or you're 80, right? So this is where we are. For us, others will appreciate us because now we are better in Vacho Vegam, Mansaha Vegam, Kruta Vegam. All these things will be in control. People will say, wow, very nice, you are improving. But when we go to our Siksha Guru and Diksha Guru, they will say, very nice. You reduce from 100 to 80, but remember where you would like to be. You would like to be 60. Hence, everybody will appreciate us and encourage us, but at the same time, correct us. So we need to be in that sweet spot where we know very well, even though others are appreciating Mansa. Because another trick the mind plays is, oh, you have already improved. सो हमारा मन हमको पागल बनाता है हमारा मन हमको कहेगा अरे आपने तो बहुत अच्छा किया है देख पहले आप कितना क्रोध करते थे अब कितना कम करते हो पहले कितना बोलते थे अभी कम करते हो और यही नहीं आसपास के लोग भी ऐसा करेंगे आसपास के मैं पर्सनल एग्जांपल दूं मैं हमेशा से योगा आया हूँ तो अगर मुझको कोई स्वीट ऑफर करेगा और उसमें पूरी चीनी है और मैं कहूँ सॉरी मैं उसे खाना नहीं चाहता मैं इसमें चीनी मैं लेता नहीं हूँ तो अक्सर फैमिलीज इन लॉज फ्रेंड्स वो ये कहेंगे अरे आप अपनी आपकी बॉडी देखो आप खा सकते हो इसको वो जो मीन खा सकते हो इसको क्योंकि आप मोटे नहीं हो तो इसको खाओगे तो आप मोटे नहीं होगे अगर मोटे होगे भी तो बहुत मोटे नहीं होगे देखो लोग तो कितने कितने मोटे हैं
सो ये माइंड आपका, आपके आसपास के एसोसिएट, और ये वो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपसे स्नेह करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि जैसे भागवतम में कहा गया है, शिला प्रभुपाद जी ने कहा, अगर एक नेक्टर भी है, अगर एक घड़ा है जिसके अंदर अमृत भरा है, उसके अंदर एक बूंद अगर आप जहर की डाल दें, तो वो अमृत का घड़ा हो गया है। अब हम उस अमृत का एक घूंट भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो अमृत रूपी घड़े में एक बूंद जहर का आ गया है। इसी तरीके से चाणक्य जी, जिनको शिला प्रभुपाद जी ने कई बार परपट्स के अंदर कोट किया है, उन्होंने कहा जो बुद्धिमान इंसान होता है वो कभी भी ये मान के नहीं चलता कि ये चीज इतनी गलत नहीं है, ले लो। उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि गलत है, नहीं लेना। हाँ, अभी पूर्ण रूप से अपने ऊपर अगर अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे 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 ग्रेजुअल, जैसे कि डॉक्टर कहते हैं कि अगर कोई 18 सिगरेट पीता है एक दिन के अंदर, तो वो 16 पे आए, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 पे आए। एकदम से अगर वो कहेगा 18 छोड़ दूंगा मैं, तो शायद ना हो पाए। और हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर छोड़ सोचते हैं, कोई भी नया भक्त आता है तो हम सीधे नहीं कहते कल से 16 माला शुरू कर दो। एक माला करो, दो माला करो, ग्रेजुअली स्लोली स्लोली डेवलप। और वही हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। वाचो वेगम, मनसहा, क्रोध वेगम, ये तीनों ही चीजों के ऊपर हम देखें तो धीरे 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 काम करना है। क्रोध ऐसा नहीं है कि एकदम से चला जाएगा। हमारे साथ में आज ओके, हमारे अविनाश प्रभु जी नहीं है। हरे कृष्ण। प्रभु जी is a great example, and he himself has said it a number of times. Maybe 7 years back, when we got associated, we knew each other for a long time, but for some reason we started Bhagavad together. And then he used to get agitated. I knew him from the past. I knew how angry he used to get. But then that anger was in his family. Remember, if a family of three, if the husband is angry, sooner or later the wife will pick up those. That's the thing. We pick things from each other. Just like a child born in French family will speak French, and Spanish will speak Spanish without any efforts. We don't even have to teach others. And similarly, somebody who will be not, we can, like in if you think about somebody in Newcastle will speak still English but in Newcastle accent. Somebody from London will speak a different accent altogether. इसी तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर अगर कोई बोलता है, कोई भारतवर्ष में कहाँ से है, वहाँ की हिंदी बोल चाल थोड़ी सी डिफरेंट होगी, होगी हिंदी, पर अगर हम वृंदावन में देखें तो ब्रज भाषा है। कोई एक दूसरे को सिखाता नहीं है, कोई वहां पे रहता है तो एसोसिएशन से सीख जाते हैं। सो क्रोधा, हमने मन की बात करी, अभी हम क्रोध की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम कान बी स्टॉप्ड। क्रोध को, the best example I can think is what it says. When somebody gets self-realized, the questions are not answered, the questions are dissolved. जब कोई इंसान मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है, वहां पे ऐसा नहीं होता कि प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। वहां पे प्रश्न होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो प्रश्न ही नहीं रह जाते। right? ये ऐसे है जैसे कि सूरज की रोशनी हम पर नहीं पड़ रही क्योंकि बीच में बादल है। अब जब हमें ये पता लग गया कि सूरज की रोशनी, ऐसा नहीं है कि सूरज नहीं है, सिर्फ वो रोशनी हम तक नहीं पहुंच रही क्योंकि हम बादल के नीचे हैं। अब अगर हम एक स्टेप आगे लें और बादल के बाहर आ, सूरज की रोशनी हम पे पड़ रही है, अब हम ये नहीं पूछेंगे किसी से कि भाई, जब हम बादल नीचे थे तो हम पूछते थे क्या सूरज है, क्या सूरज की रोशनी है। जैसे हम पूछते हैं क्या भगवान वाकई में है, क्या गोकुल धाम है। अब ऐसा नहीं कि उसका आंसर मिल गया, हाँ भगवान है कि गोकुल धाम है, क्योंकि जब हमारे सामने ही सूरज है, हमारे सामने ही भगवान है, तो हम ये सवाल पूछेंगे ही नहीं कि क्या सूर्य है। अरे सूर्य की रोशनी में हम खड़े हैं। अब हम ये नहीं पूछेंगे, अब हमें दिख गया है वो बादल के नीचे थे हम, हमें पता लग गया है कि हमारी गलती क्या थी।
इसी तरीके से जो क्रोध है, ऐसा नहीं है कि क्रोध लिखा है, प्रॉब्लम क्या है कि इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। क्रोध खत्म नहीं होगा, क्रोध आएगा ही नहीं। या एक और जगह एग्जाम्पल आता है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखी ट्रेन का। ट्रेन आती है, हम देखते हैं, पर ट्रेन से एसोसिएट नहीं होते। तो कहते हैं क्रोध जिस वजह से, the reasons, we always discuss the cause and effect. There is a cause, because of that anger comes, right? If we discuss among ourselves, or if we see how the solicitor, the lawyers work, we try to explain, or more than explanation, we try to justify. If we ask children, let's say if you have two children, and we say, why did you do that? And straight away, the natural instinct is to give the justification, not to accept that what I did was wrong, but to justify. Court, the same thing happens. The the lawyer will try to justify that why my the person I'm defending, the person has done something wrong. Why the person has done? Why the person has committed this crime? Whatever it is, they always try to justify, right? But there's no justification. Why the justification comes? Because we are attached. The train comes, train goes, we don't associate. The cause of the train is theirs. The cause of the mind disturbance, the cause of the angerness is still there. People will still say the wrong things, which used to bring us anger. But now we are not we are not reacting, we are responding. Right? So it's not unconscious, it's conscious. Hence, we see very easy what's happening. The causes are still there. The material world is still there. The people are still there. Same people in the office, same people in the family, they will still behave the same. The causes are there, the effect that will go away, right? So what happens? It's not that all these things will stop. No, but our reaction will go down, right? So, like it says, another problem is forced to eat in carny shops. So a lot of times this happens. We need to go out somewhere, we need to eat it, or many other examples could be there. But what is the solution? So in this example, it says, okay, we will discuss that in Jiva, but much better. It's actually part of that. But solution, apply against blasphemers. Who are blasphemers? And there are examples of Hanumanji, Arjuna, Jagai Madai. Blasphemy is a easy way to understand is, so again giving benefit of doubt to others, those who are confused. अगर हमारे ऊपर कोई अपराध करता है, तो हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि इनको पता नहीं है ये क्या कर, जैसे जगाए मदाए का हम एग्जाम्पल चरितमृत में आता है, उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन जब भक्त उनके पास आते हैं, भक्त अभी उनको पिक करना चाह रहे हैं, उनसे गुस्सा नहीं होते हैं, क्रोध नहीं आता। भगवान को नित्यानंद जी वहां पर थे, उनको खुद नहीं आ रहा था, वो उनको समझाना चाह रहे थे कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, राइट? भगवान राम को रावण के ऊपर क्रोध नहीं आया, भगवान कृष्ण को कंस के ऊपर क्रोध नहीं आया। पर हाँ, जब भगवद गीता के अंदर अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे मारूं इनको, भगवान कृष्ण उनको एजिटेट करके क्रोध दिलाकर लड़ाई नहीं करवाना चाहते, भगवान को समझा रहे हैं ये आपकी ड्यूटी है। जैसे भगवान राम की ड्यूटी रावण को का वध करना, भगवान कृष्ण की ड्यूटी रही वहां पे कि कंस को खत्म करना, क्योंकि ये लोग जो कार्य कर रहे थे वो गलत थे, right? तो कभी भी हमारे साथ कोई कार्य करे, तो हम ये समझते हैं कि हमको क्रोध आने की जरूरत नहीं है, बट अगेन easy to understand and hard to follow. So many other examples are there, but let's move on to the next one, jiva, which is we understand very well what's to eat, what's not to eat. Why can't we control our sense control?
Vachogam mansaha, krodavegam jiva, the tongue. Always remember years ago when I was in school, I used to do yoga. And I used to go out in yoga with a yoga guru. And next to the, in Delhi, next to the, there was a temple. In the temple, used to do the yoga open. It was a open sky next to the bank of Yamuna. And then our yoga teacher, he used to say that control your tongue. If you control your tongue, two things will happen. One, you will, the very first is vachovega. Control your tongue, what you speak, and also control the taste buds in your tongue, what you eat. And he used to say, if you control these two things, control what you eat, your body will be safe. Control what you speak, your relations will be sweet. तो योगा गुरु जी हमेशा ये कहते थे कि अपनी जीवा पे अगर हम नियंत्रण कंट्रोल रख पाए, तो अगर जीवा से हमें क्या बोलना है और जीवा से हमें क्या खाना है, ये दो चीज ध्यान रखें, तो जीवा से जो खाना है इसका ध्यान रखें तो अपना शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, और जीवा से जो बोलना है इसका ध्यान रखें तो हमारे जितने भी रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, वो स्वीट रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशंस खराब होता है, उसने मुझको ये कह दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, पर कैसे पता लगा दिया जब उसने ये बोला, तो रिलेशंस तभी खराब थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वाचो वेगम जीव वेगम, अगर ये दो चीजें हम कंट्रोल करें, दोनों ही जीवा से कंट्रोल है। अब हम खाएं तो सही, लेकिन प्रसाद खाएं। यहाँ पे आता है एग्जाम्पल, लिटरली अंडरस्टैंड कि वी कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन नॉट गो विदाउट ईटिंग। गौतम बुद्धा himself tried it, but later on he realized it's a middle path. Not that we don't eat, what we eat, right? So we should always, always remember that what to eat and when to eat. And then udarupastha vegam. So udar is again our stomach. And then the very similar thing, that if we control rest of the things, that's when the first two, and if you think of out of all six, like what Mataji also said, mansaha, mind, if mind is in control, but how mind will be in control? When we engage our buddhi in devotional service. So the main thing is continue doing devotional service, continue investing our time in buddhi. Buddhi, so when the word comes, we say Krishna consciousness. Srila Prabhupada ji said, become conscious before you can become Krishna conscious. Why? Because if we are not conscious, we will not realize whether we are Krishna conscious or we are material conscious, Maya conscious. So we need to be conscious. Then we will know what kind of conscious we are. But before we go get conscious, we need to understand that how we will become conscious, and buddhi will do it, right? However, of course, it's a catch 22 whether the chicken or the egg comes first, because buddhi, when you know, kids know that they need to study, right? Adults know we need to take good care of our body, but do we do the yoga every day? Do we do all the study every day? Do we do the chanting every day? We know it. But why can't we do it? Mind is not controlled. Now, how mind will be in control? When we do all these things, mind will be in control. So what happens then? That's where the association comes in. हम अकेले ये सारी चीजें करना चाहें, मुश्किल है। अगर हम भक्तों के साथ में करें, हाँ, कई बार ऐसा होता है, हमें मूवी देखने जाना है और हम देखते हैं कोई और फ्रेंड चलेगा साथ में। अगर कोई फ्रेंड चलता है तो इजी है, या कोई फ्रेंड हमें फोन करता है मूवी देखने चल रहे हैं चलो, आपका मन नहीं भी है तो आप चले जाओगे। हम्म? और कई बार आपका मन है, सामने वाला नहीं चला तो आप कहोगे चल यार अकेले क्या जाना। ऐसे ही सिगरेट का, आपने सिगरेट छोड़ दी, आप सिगरेट नहीं पीना चाहते, लेकिन एक दोस्त ने फोन किया। हम्म, हमारे साथ में ऑफिस के अंदर एक थे, वो कहते अब मैं ऑफिस से निकलते थे, ऑफिस की जो एंट्रेंस थी वहीं पे बिल्कुल साथ में सिगरेट पीने की जगह बना रखी थी। तो उन्होंने कहा ये बहुत गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा अपने लिए कि मैंने अब सिगरेट छोड़ दी है, लेकिन जब भी मैं ऑफिस में आता हूँ मेरे को वो स्मेल आती है वहां से।
तो मैंने कहा हाँ स्मेल पे भी आती है। कहते पर आपको कोई स्मेल आती है तो आपको बुरा लगता होगा। मैंने कहा हाँ बुरा लगता है। कहते मुझे जब स्मेल वो आती है मुझे अट्रैक्ट करती है। मैंने सिगरेट छोड़ी हुई है, मुझको ऐसा लगता है वो स्मेल बुला रही है मेरे को। तो हम लोगों ने बात करी ऑफिस में, और हमने वो डेडिकेटेड स्मोकिंग एरिया को चेंज करा के ऑफिस के पीछे किया। एंड द ऑफिस पर्सनल वाज so intrigued that we had two different reasons. One who doesn't like it, and one who likes it but don't want to like it. And of course, because it was health oriented, it was much easier to get results. This is what we're saying. What is association? जब हम भक्तों के में होंगे, अगर हमारा मन नहीं है चैंट करने, लेकिन हमें मालूम है एवरी मॉर्निंग हमको जूम ज्वाइन करना है, हमें मालूम है भागवतम की क्लास होने वाली है, हमें उस भागवतम के अंदर क्लास में आना है। जैसे मायापुर इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन क्लासेस होती हैं भक्ति शास्त्री की, अगर आपने नहीं की हो। हम भक्ति शास्त्री के बाद उसके बाद भक्ति वेदांता कर रहे हैं। भक्ति वेदांता के अभी 22 जो मंडे है, मंडे से ही नियरली 3 प्रोबेबली 4 वीक्स के लिए एवरी वीक डे मंडे टू फ्राइडे 2-2 घंटे की वहाँ पे भागवतम की क्लास है। जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, नियरली 30 स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट उसके अंदर एक प्रेजेंटेशन देंगे 1 घंटे की। क्योंकि कोर्स खत्म हो गया है लेकिन प्रेजेंटेशन चलेंगे। इमेजिन मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 2 hours भागवतम क्लास, एंड इट्स अ प्रेजेंटेशन गिवन बाय एवरी स्टूडेंट। हाउ इट्स पॉसिबल? जस्ट बिकॉज वी आर इन एसोसिएशन। उसकी फीस आई थिंक 1200 रुपये, आई थिंक, कोर्स की। तो अगर आप भक्ति शास्त्री करना चाहें, डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, बंगाली में है, गुजराती में है। ऑफ कोर्स इंग्लिश इज द प्राइम। if you want to do in English, then there are many slots. If you want to do in other languages, then you have to wait, but the courses are there. But the beauty is that even if you don't do those courses, like these sessions are there, but many other devotees, they are active. So keep yourself in association and all these things will be in control. So this is the first, and now the only other thing we have is we can get in each one of them and try to understand that better. But what we have discussed, we have another presentation as well. But what we have discussed, anyone has any questions on that, any thoughts on that? Hare Krishna. So what we see in this picture, that if you think it's a beautiful mind, there is actually a movie of it, Hollywood, a beautiful mind. But of course, it could be a dirty mind. The mind is mind. The thoughts which come in mind makes it beautiful or dirty, right? It's not mind's problem. It's a consciousness. It's the association which brings beautiful thoughts and then mind become beautiful, right? And it's the dirty thoughts, material thoughts, seductive thoughts, the mind will become dirty mind. So it's the thoughts, and thoughts are controlled by the engagement, right? So trying to empty the mind artificially. Some of the yogis, for example of Sauravi Muni from Bhagavatam, constant remembrance and the service to Krishna naturally purify and calm the mind. It happens naturally, just we are keeping ourselves in the engagement. And the anger is the same, Krodha Vegam, cannot be eliminated. It's spiritually redirected. And we have seen many examples of it as well. So it is justified when sending Krishna or his devotees. Hanuman did it, Arjuna did it, Lord Chaitanya Mahaprabhu did it. That they all got angry. हनुमान जी ने लंका जला दी, लेकिन that was in the service. अर्जुन ने लोगों का वध किया महाभारत में, but Krishna said, do it for me. लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जी जगाई को मारने के लिए तैयार थे, क्योंकि नित्यानंद जी के ऊपर उन्होंने हमला किया था। Not for yourself, but for someone else. So redirect the क्रोध,
Personal insults should be tolerated. Anger should only arise in the service to the Lord. That's it. In one sentence, it's meditation. Jiva. Now this is amazing that how one single tongue has so many different tastes. अगर हम देखें कि फॉर्चुनेटली इनफ बी ब्लेस्ड, मुझे मैं ऐसा मानता हूँ कि माँ की कृपा है कि ज़्यादा टेस्ट नहीं है, वरना मतलब ज़्यादा पता ही नहीं था कौन सा टेस्ट है। लेकिन कभी कभी बहुत ही अचरज होता है, सरप्राइज, किसी के साथ बैठे होते हैं और वो कहते हैं इसमें खट्टा थोड़ा सा कम है, इसमें ये थोड़ा सा। एंड स्पेशली माताएं, द मदर्स, दे नो इट सो वेल, little bit this or that, and some people they are so keen they can tell all the ingredients. But this is what we need to. If we teach that to in prasadam, एक example में आया कि this is a Buddhist example. I don't know, Swami Vivekananda ji gave, I heard it somewhere else out of Hare Krishna. It's so true for prasadam. They said, well, Swami Sarvapriyananda ji shared this. कि अगर आपको कोई मैंगो दे और लेमन दे तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% पीपल मैंगो लेंगे लेमन की जगह। आम पसंद है, नींबू पसंद नहीं, नींबू खट्टा है, आम स्वाद है, अच्छा। लेकिन अगर आपको प्रसाद के रूप में दिया जाए, अगर सब बैठे प्रसाद के रूप में कि जो भी प्रसाद आया, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रसाद में जो मिलेगा भगवान थैंक यू ले लेंगे। So that's the beauty. That's a classical practical example that we offer everything to Krishna. And when we get it as prasad, then it's not that sweets are this or that. It's a prasad. It's a prasad. So great. Thank you so much. And we're great today. Went to a lot of examples. Again, try to have six. Hopefully, next week we will get to summarize and end the verse 1. Next 27 will be the last session of the year. And it will start 2026. So we will spend some time in the Vegam, Vacho Vegam. Mansaha, Krodha Vegam, Jiva, Upasthata Vegam. So these six senses, if we can control, or at least one of them in a week, we try. I'm sure we will gradually improve, and it will very well for us. Not only spiritual, but materially. So thank you so much for your presence. Look forward to see you next week as well. With that, Prabhupada ki jai, Gurudev Maharaj ki jai, jai Jai. jai Shri Radhe. Hare Krishna. Hare Hare Thank you, Krishna. Pranam, Prabhuji. Hare. Sarva. Thank you, Prabhuji. Thank you so Hare Hare much. Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna. Mataji, Hare Krishna, Dhanvat, Dhanvat Pranam, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.